हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज की वीडियो में मैंने ऋतिक रोशन का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, उसका ट्यूटोरियल डाला है। ये वाला आप देख सकते हो। दोस्तों, मैंने इसमें कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने पूरा इसमें ट्यूटोरियल डाला है, तो पूरा प्लीज़ ज़रूर देखना। और मैंने इसमें ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। और आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट आउटलाइन को डार्क करने के लिए मैंने बी पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि जो लाइट आउटलाइन होती है उनको अगर अपन डार्क कर लेते हैं तो शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसलिए सबसे पहले यदि आपकी आउटलाइन लाइट है तो उसको पहले डार्क कर लीजिए। हल्के हल्के हाथों का यूज़ करना है शेड करने के लिए, ज़्यादा हार्डली मत करना। फिर शेडिंग को और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है। ब्रोज में मैंने पहले 2B पेंसिल का यूज़ किया है और फिर 4B पेंसिल का। नोज़ में जो डार्क एरिया है उसके लिए मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया है। उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा हार्डली यूज़ किया है HB पेंसिल को। बाकी फेस में मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है। वीडियो को तो मैंने फास्ट कर दिया है, लेकिन मुझे रियली में इसको बनाने में 4 आवर का टाइम लगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी और इम्प्रूव होता चला जाएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। एक दिन में आप कहोगे एक दिन में आप सीख जाओ तो कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसको 3-3, 4-4 घंटे लगा रहता हूँ करने के लिए। ब्लेंडिंग के लिए मैंने एक फ्लैट स्मूथ ब्रश का यूज़ किया है और एक पेपर स्टम्प का भी यूज़ किया है, जो मैंने खुद घर पे बनाया है। बियर्ड में मैंने लेयर बाय लेयर ड्रॉ किया है। पहले 2B पेंसिल से इसको का यूज़ किया और फिर मैंने 3B पेंसिल से इसको यूज़ किया है। लिप्स के लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है और जो डार्क आउटलाइन है उसके लिए 6B पेंसिल का यूज़ किया है।
डार्क पार्ट है उसका बीच का, उसको मैंने 4B पेंसिल से ही सेट किया है। और जो आजू बाजू जो परछाई पड़ रही है उसमें जो डार्क पार्ट है उसके लिए मैंने 3B पेंसिल का यूज़ किया है। सब लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फेस रियलिस्टिक लग रहा है। हेयर के लिए मैंने केवल 2B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है। हेयर के लिए पहले जो डार्क जो आउटलाइन है उसको पहले 2B पेंसिल से डार्क कर लो और फिर हल्के हल्के हाथों से 2B पेंसिल से उसमें स्ट्रोक लगाओ। एकदम से डार्क मत करो, धीरे धीरे करो, लेयर बाय लेयर करो, तभी आपका जो हेयर है वो रियलिस्टिक दिखेगा। यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल का। इसमें भी ज़्यादा हार्डली यूज़ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाने हैं। हाँ, बट जो ज़्यादा डार्क पार्ट है उसके लिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा हार्डली यूज़ करूँगा। केवल आपको ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का ही यूज़ करना है, पेपर स्टम्प का ही यूज़ मत करो, वरना पूरा हेयर बिगड़ जाएगा, रियलिस्टिक वो नहीं दिखेगा। दोबारा से डार्क पार्ट को और डार्क करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जब तक आपके बाल रियलिस्टिक ना दिखें तब तक आपको ऐसे ही डार्क करते रहना है। गले के लिए आपको 2B पेंसिल का ही यूज़ करना है और जो ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ के लिए आपको 4B पेंसिल का हल्के हाथों से यूज़ करना है।
8वीं पेंसिल का यूज़ किया है और फिर 9वीं पेंसिल का यूज़ किया है।